The indifference curves are part of ordinal utility analysis. They are part of ordinal utility analysis. Okay. Now, let us come to the point where we understand what are indifference curves. Okay, so anyone who like to explain what are indifference curves? Now, याद रखिए, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व को समझते वक्त, इंडिफरेंस कर्व हो या बजट लाइन हो, ये सब किसके बारे में बात करते हैं? दे डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. याद रखो, दे डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ टू combination of two goods with the same level of satisfaction, which provide same level of satisfaction. Same level of satisfaction. Okay. Now, ऐसे ये दो गुड्स के ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सेम रहता है, राइट? तो उसमें वेरिएशन नहीं होता है. तो जब वो वेरिएशन नहीं होता है तो उसको क्या फर्क नहीं पड़ता, तुम ये दो या ये दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, राइट? यू मे गो फॉर 2 and 3 or 3 or 2, 1 and 4, whatever it is, राइट? तो वो क्या बोलता है, याद रखिए, राइट? The thing what he wants to highlight here is his satisfaction level will be same, and when his satisfaction level will be same, he will not be going for he will not be saying that I don't want this combination. He will be indifferent towards each combination because he is getting same level of satisfaction. Assume that there is a combination of A, there is a combination of B, and there is a combination of C. If these three combinations are giving him same level of satisfaction, it doesn't matter whether it is A, B or C, he will remain indifferent towards them. What is mean by indifferent? He is accepting all of them equally. Okay, so that's why वो जो कर्व है जो ऐसे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, उसका नाम रखा गया है इंडिफरेंस कर्व. क्योंकि ये कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे या जितने भी पॉइंट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन. जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन के टुवर्ड्स जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है. वो कैसा है? इंडिफरेंट. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? If you are clear, you can raise your hands so that I can proceed. Okay, so now next is, now here we need to understand, now this is combination of two goods को समझना जरूरी है. When it comes to combination of two goods, it means that there cannot be a single commodity, there cannot be a single unit. वहां compulsory क्या होना जरूरी है? There has to be two goods. मतलब एक गुड से हम इंडिफरेंस कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. हमको मिनिमम कितना चाहिए? 2 गुड्स, राइट? मिनिमम क्या? 2 गुड्स ही चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ 3 का तो प्रोविजन है ही नहीं, राइट? तो 2 गुड्स होना बहुत जरूरी है एंड दे शुड प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब देखिए, चलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन की ओर. नाउ व्हाट आर द properties of indifference curve, and you need to quote 4 properties in your examination. Right? Remember how many properties? 4 properties. Right? Now, in that, the property number 1 is, the property number 1 is the first property is indifference curve slopes from
लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो आप इंडिफरेंस कर्व आप तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, उसका जो कैसे दिखता है अगर आप कभी देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। तो ऐसा दिखता रहता है, राइट। अगर यस बोले तो आप रेस हैंड करो, ऐसा ही दिखता है या नहीं बताइए। Now, why it happens? See, remember, we call it as negative slope. हम इसको क्या कहते हैं? Negative slope. Now, question arises: why there is negative slope? Now, in order to understand negative slope, हमको ये समझना होगा कि there is MRS, that is marginal rate of substitution. इसका मतलब क्या है? याद रखिए, ये नेगेटिवली स्लोप होने का रीजन ही यही है कि अब समझ लीजिए आपके पास x एंड y, अभी हम जो t की बात कर रहे थे, मैं उसको ही एक एग्जांपल लेता हूं। अगर समझ लीजिए आप सिर्फ ये हमने एग्जाम्पल आपको मैं और एक बार रिकॉल कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 20 रुपीज इनकम था, तो 5 रुपीज का टी था और 5 रुपीज का कॉफी था। अगर समझ लीजिए मैं 4 कप ऑफ टी कंज्यूम कर रहा हूं और मैं y 0 है। अगर समझ लीजिए मैं 1 कप कॉफी कंज्यूम करना चाहता हूं, तो मुझे टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। टी को सैक्रिफाइस, मैं और वो मतलब और वो जो मार्जिनल रेट ऑफ, डिटेल में नहीं बताऊं, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली इट इज। In order to consume 1 unit of y, you need to sacrifice 1 unit of x. That is called as the marginal rate of substitution. In order to consume 1 unit of y, you are sacrificing 1 unit of x or more than 1 unit। तो बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक को पाने के लिए आपको दूसरे को खोना पड़ेगा। सिंपल याद रखिए, फिल्मी डायलॉग होता है ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको y को पाना है तो x को खोना पड़ेगा। तो यही होता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज so आपको ये बताना है कि it is negatively sloped and it is because of marginal rate of substitution. What is mean by marginal rate of substitution? In order to consume 1 unit of x, you need to sacrifice the other unit of y. So next is second one. Higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. Right. Now point number 2. So higher I see, right? Then higher will be satisfaction. Certainly होता है, याद रखिए ये। When you draw an indifference curve, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, which will make you understand. Assume that you have drawn an indifference curve. Assume that ये 1 है, 2 है और 3 है। ये भी 1 2 3 है। अगर आपने यहां आपने एक इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट बनाया है, दैट इज 2 and 1। तो ये एक पॉइंट है जहां आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आप क्या करते हो, और एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हो। तो अज्यूम दैट ये यहां कनेक्ट करके यहां कनेक्ट करेगा, तो आप देखिए यहां एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट पे हमारा कॉम्बिनेशन क्या था, 2 and 1 था, और ये कॉम्बिनेशन पे हमारा क्या है, 2 and 2 है। याद रखिए 2 and 1 और 2 and 2। तो आप देखिए, और हमेशा याद रखो, व्हाट इज हायर इंडिफरेंस कर्व? Whenever you draw an indifference curve towards the right, it indicates the higher indifference curve. Higher indifference curve जो है वो towards right मूवमेंट करते रहते हैं, राइट? तो अगर आप
indifference curve, higher the indifference curve, higher will be the satisfaction, because जो first IC1 है, I will mark it as IC1 and I will mark it as IC2. In the IC1, you can see the one which is at the lower point. ये indifference curve में क्या consume कर रहा हूं, and 2 and 1. ये जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे जो पॉइंट है, मैं यहाँ क्या कंज्यूम कर रहा हूं, 2 and 2. आप देखिए सर्टेनली यहाँ सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए क्या कहा गया है, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट. इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट intersect each other. Indifference curve cannot intersect each other. तो इसको मैं बना देता हूं नंबर 3. So intersection जो है that is not possible. I will tell you why. We know that, see, if there are, now assume that this is first IC1. ये क्या है, हमारे पास IC1 है. IC1 is a indifference curve which provides combination of goods which provides same level of satisfaction. And when I draw IC2, मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बताता हूं. जब मैं IC2 ड्रॉ करूंगा तो IC2 will also be depicting the combinations which gives a level of satisfaction. वो भी एक level of satisfaction दिखाता रहता है, IC1 and IC2. बराबर है. And we know that when you draw a indifference curve towards the right, it will be representing higher level of satisfaction. When you draw it towards the left, it will be giving us the lower level of satisfaction. But what happens when when two indifference curve intersect? Remember these 2 points. Remember, sorry, the point of intersection will have same level of satisfaction, which is impossible. Which is impossible because each indifference curve shows the different level of satisfaction. When they intersect, it means that they are pointing us towards same level of satisfaction, which cannot be true. So that's why the IC1 and IC2 cannot intersect, because they are representing different level of satisfaction. When they intersect, it indicates there is a same level of satisfaction, which will be untrue in case of indifference curve. Right? And the last one, that is the point number 4, that is indifference curve cannot touching x-axis या y-axis को वो touch नहीं कर सकता है. They cannot touch x-axis and y-axis. That's why आप देख रहे हो जब भी मैंने draw किया है, my curve has not touched the baseline. Now question arises, sir, why they cannot cannot touch x-axis and y-axis? Remember, when you draw indifference curve is the combination of two goods. Indifference curve is the combination of two goods which gives us the same level of satisfaction. Remember, when my indifference curve touches this y-axis or it touches the x-axis, do you know what does that mean? The combination has y units will be 0, or here the x units will be 0. Remember, when the y unit is 0 or x unit is 0,
then we fail with the condition that the combination of two goods, because when x is 0, entirely it will be y, and when y is 0, it will be entirely x, which is against the definition of indifference curve, या basic concept of indifference curve, which tells that it is the combination of two goods which gives same level of satisfaction. So when x or y, or the commodity x or commodity y is 0, it fails to satisfy this condition. So that's why they cannot touch either x axis or y axis, because there cannot be 0 units in a combination. There has to be something, right? Because it is the combination of two goods. Hoping that you have understood all the 4 features of indifference curve. If you have understood, you can raise your hands, or if you have any doubt, you can post it in the chat box. Definitely, I will respond to them. Or if you have understood, even you can tell like you have completely understood the 4 features of indifference curve. Okay, so there are positive responses that they have understood. Now, we will finish our discussion with a small discussion, that is the family of indifference curve, or we call it as indifference map. It is very easy to understand. We will finish our discussion with that topic today, the indifference map. Now, what is indifference map? Now, एक ऐसा मैप जहां बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. IC1, IC2, IC3 और IC4. इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि what is, like write a short note on indifference map. And you have already seen this diagram. You may draw better than me. You know that I'm an accountancy teacher, so you cannot expect me to put a beautiful diagram. Even that is not possible, because I'm a one who is very good in drawing rows and columns. Okay, so now indifference curve. Now we are discussing about the family of indifference curve, that is indifference map. Now, if somebody asks you what is indifference map, you should remember the family of indifference curve is called as indifference map. The family of indifference curve is called as indifference map. Now, what all points you need to remember in the indifference map? See, an indifference curve drawn towards the right gives you the higher level of satisfaction. That means, in this diagram, the IC4 is greater than IC3, which is greater than IC2, which is greater than IC1, which is very easy to write. Istu simple ಬರೆಯಕಾಗಲ್ರಿ ನಮಗೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಇದನ್ನ ಏನನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತದ, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್, ಅಂದ್ರೆ IC4 ಎಲ್ಲರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು IC3, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು IC1, and ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು IC2, and ಆಮೇಲೆ IC1. So that can be written very easily. IC4 is greater than IC3, which is greater than IC2, and which is greater than IC1. Are you clear with this point? Right. And let me check anything is to be written here. Yes. Now next is one. A rational consumer always prefer higher level of. हाँ सही बात है. अगर मेरे को पूछा गया, अरे तुम कौन सा इंडिफरेंस कर्व चूज करोगे, मैं तो बोलूंगा कि मुझे IC4 चाहिए, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. राइट. इसको ही आपको आंसर में लिखना है. पहले आपको वेरी सिंपल, देखिए कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये डायग्राम के लिए शायद 2 मार्क्स मिल जाए या 1 मार्क्स मिल जाए,
बाकी आपको 3 पॉइंट क्या लिखने हैं मैं आपको सिंपल बताता हूं. फर्स्ट वन, व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप. और कुछ आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. देन नाउ नेक्स्ट इज you need to write in this diagram, right? The indifference curve drawn towards the right will represent a higher level of satisfaction, and in that you need like that means the IC4 will be greater than IC3, right? Simple, very ये जो पहले आपको बताया मैंने वैसे आपको बता लिखना है. And और आपको और एक पॉइंट क्या लिखना है? A rational consumer will be always willing to go for the higher difference indifference curve as he will be looking for higher, because आपको मालूम है a rational consumer जो होता है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर ही सोचता रहता है. तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा IC4 को ही ऑप्ट करेगा क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, right? So hoping that you have understood these concepts. So first one is budget set, budget line, and this time I hope there may be a question on this budget set and budget line, and the next one is the indifference curves. And tomorrow we will be discussing about marginal utility, demand analysis, that is shift in demand curve, then movement along the demand curve. बहुत अच्छे concept है, and tomorrow we will be spending time on them, and hoping that you have understood all these concepts. And I request that you should come up with your feedback so that I can improve. मैंने आपको बताया था कि आपको जो कुछ भी लगा है you need to you WhatsApp me personally, not in the group, so that I can improve. And or you can write it on the YouTube channel. मैं आपको जब वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको लिंक भी दिया रहता हूँ. So I'm taking lot of efforts to make this subject easy, and I wish that you respond to that. Okay, and one more thing, don't feel that the exams have been postponed. You can relax. Remember, they can announce it anytime, right? And I wish that you be ready always. Okay, and love this subject, and this subject is very good if you understand. Okay, so thank you very much, and we will meet tomorrow, right? I will be waiting for your responses in the next 5 minutes. So thank you very much.